So, meeting you after a day, 26th of January. I hope you enjoyed 26th of January. I don't know how you enjoyed it. Could be possible you enjoyed the holiday. Now, I gave you some homework, isn't so? And in homework, I told you about we have to read judicial activism. I defined you what do you mean by judicial activism. Activism, some PILs or their public interest litigation. जो पब्लिक के इंटरेस्ट में आप लिटिगेट करते हो, केस डालते हो कुछ कोर्ट के अंदर on the behalf of public, you activate some type of activity in the court that is called public interest litigation, in which I told you in Bihar and any other jails, lot of prisoners were there where that term is already over, लेकिन तब भी वो जेल में सड़ रहे थे. तो कई social activists ने उनके लिए they put some PIL and they won the case. Then I told you that I will start from judiciary and rights. This is page number 138. पेज नंबर 138 पे है और उस पे एक बॉक्स है. ये बॉक्स आप खुद पढ़ेंगे. यू आर द जज. आप सपोज आप जज हैं तो आपको क्या करना, व्हाट आर द बेसिक थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इट. कुछ प्रॉब्लम आ जाए आप उसको कैसे फेस करोगे, तो उसके ऊपर आपने लिखा है. बुक इज दैट इज पब्लिश्ड, दैट इज इन द बॉक्स. नाउ जुडिशरी एंड द राइट्स, ये क्या है? Now, it could be possible in your question that what do you mean by judiciary and the rights? We have already seen that the judiciary is entrusted with the task of protecting rights of individuals. Judiciary क्या है basically? आप देखो ले देकर judiciary ये है कि जो every judiciary of the world they are there to protect you. आपके rights को protect करने के लिए judiciary है. One very simple example, very simple sentence. जुडिशरी क्या करती है? आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और कुछ नहीं करती. वो आप समझते हो आपके राइट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो आपके अगेंस्ट जा रहा है वो समझता है उसके राइट्स आपके से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यू फाइट फॉर योर राइट्स एंड जुडिशरी सेज दैट हुज राइट्स शुड बी देयर. किसके राइट्स वहां पे हो. इवन जुडिशरी कहती है कि प्रिजनर्स के राइट्स है. जुडिशरी कहती है कि एनिमल राइट्स हैं, एनिमल्स के भी अपने राइट्स हैं. जुडिशरी कहती है कि पेड़ पौधों के यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट एंड ऑल, दे हैव देयर ओन राइट्स. नदियों के अपने राइट्स हैं. इवन नदी जो है ना, गंगा नदी, राइट, दे सेड दैट इज अ लिविंग बीइंग. वो जुडिशरी कहती है कि ये नदी जो है माँ के रूप में है. इट इज गिविंग द वाटर, लाइफ सेवियर है ये. So this is also living being, right? So judiciary says judicial role is to save your rights. Entrusted with the task of protecting rights of individuals. The Constitution provides two ways in which Supreme Court can remedy the violation of rights. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि आपके राइट से किसने छेड़खानी की हो, मे बी स्टेट, मे बी इंडिविजुअल, मे बी ग्रुप, मे बी एनी सोसाइटी who have something trespasses your rights, then there is a remedy, have to be some type of remedy in the Supreme Court. So first point, first it can restore fundamental rights. हमारे पास क्या है? We are very much conscious, I told you earlier also that we are very much conscious about our rights. हमारे fundamental rights बहुत वर्ड में आपको इतने fundamental rights इंडिया में जितने हैं ना, वर्ड में कहीं नहीं मिलेंगे. एक साउथ अफ्रीका में, एक आपके पास. इंडियन फंडामेंटल राइट्स आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? सो बेसिकली फर्स्ट इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इश्यूइंग रिट ऑफ हेबियस corpus, mandamus, etc. Article 32. Right. The High Court also have the power to issue such writs. Article 226. Right, Article 226. Then, secondly, the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational. कभी-कभी Supreme Court क्या कहती है कि basically कुछ laws हैं
जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, और दे शुड नॉट बी देयर। आपके पास एक राइट हुआ, अधिकार हुआ करता था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, प्रॉपर्टी का राइट होता था पहले आपके पास, होता था, फंडामेंटल राइट के अंदर है, लेकिन अब नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी अब आपके पास नहीं है, राइट। सो secondly, the Supreme Court can declare the concerned law, any law that is concerned law, as unconstitutional. कोई लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है, एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल, और इसलिए वो नॉन ऑपरेशनल है। आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 के अंदर है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को आपको प्रोटेक्ट करती है लॉ, किसके लिए, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट योर राइट्स। ड्यूटीज भी है, पर ड्यूटीज को हम देखते ही नहीं, हमारी क्या ड्यूटीज है, तभी तो भारत का ये हाल है, राइट। तो ड्यूटीज नहीं है, ड्यूटीज को नहीं, पर हाँ आपके राइट को वो प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड आपके पास क्या है कि किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को, इफ यू थिंक that it is not be, should not be there, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है। Together, these two provisions of the Constitution establish the Supreme Court. Together, these two provisions, इन दो provisions ने क्या किया of the Constitution established, इन दोनों जो लॉ थे, इन दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनाया as the protector of fundamental right. सुप्रीम कोर्ट को जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑन द वन हैंड, एंड द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है कौन सा लॉ पुराना हो गया है, कौन सा लॉ विच लॉ शुड नॉट बी देयर, इंटरप्रेट करती है उसको। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड, the second of the two ways mentioned above involves judicial review. इसको हम judicial review कहते हैं। जो आप कोई भी कानून, सपोज ये आउट ऑफ वे जा रहा है, एनी लॉ, सपोज कुछ कानून जो है ना 1947 में वो ठीक थे, but 2022 में वो कानून बहुत पुराने हो चुके। we have to what, we have to say goodbye to those कानून, we have to say goodbye to those laws. So what to do? We to have to say no, these laws are not acceptable. So they are the protector of fundamental rights of the citizen one hand, and interpreter of the constitution on the other. ये 2 पॉइंट्स हैं जो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है। प्लीज अंडरलाइन कर लो, पॉइंट लगा लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। Together, these two provisions of the Constitution establish Supreme Court. They are what is Supreme Court? It is the protector of your fundamental rights, and one hand, and second is two ways mentioned the above involves. इसको second point है कि Constitution के अंदर which is law is not acceptable, उसको interpret करती है, और it said that it's not acceptable in two ways mentioned above, as I told you, if we call it judicial review. मतलब किसी कानून को आप ना मानने के लिए आप judicial review में भी डाल सकते हो उसको। I'm sorry. Perhaps the most important part of the Supreme Court is the power of judicial review. अब आप सोचो सर judicial review है क्या? Suppose Supreme Court ने एक फैसला दिया और Supreme Court says this is acceptable, this has to be accepted. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कानून बना दिया, कानून बनाने के लिए पास कर दिया, लॉ बना दिया। Now many PIL say that this law should not be there. अब कई PIL डाल दिए उन्होंने, एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दिया। इस जुडिशियल फैसले को, जुडिशियल फैसले को जो दिया गया है, इसको रिव्यू कर, दोबारा देखो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन। देन उसको यदि दोबारा देखा जाए उस कानून को, देन इट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, राइट। व्हाट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू मींस, नीचे देखो लिखा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू मींस, हियर आई एम गिविंग इन द स्क्रीन, जुडिशियल रिव्यू मींस, हियर इट इज, the power of the Supreme Court or High Court to examine the constitutionality of any law
if the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provision of the constitution. उनको लगे कि ये लॉ जो हमने बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है. It's not according to the constitution. It's not according to the संविधान. It's not acceptable by the people. You know, democracy, what is democracy? By the people, for the people, not of the people. ये डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हो सकता है इसको जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया जाए. राइट. Such a law is declared unconstitutional and inapplicable. The term judicial review is nowhere mentioned in the constitution. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट लॉ बना दे, पार्लियामेंट उसको पास कर दे तो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए. लेकिन मोरली वी थिंक कि नो इंसान है, हम गलती हो सकती है तो इसका जरूरी नहीं है कि जो वट एवर वी हैव डन, वट एवर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग ही बैठे हुए हैं, वहां पर भी लोग इंसान ही है. ऐसा नहीं कि वो गलतियां नहीं करते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ. राइट. सो दिस नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर the fact that India has written constitution. सबसे बड़ी बात क्या है इंडिया के पास? इंडिया के पास written constitution. There are two types of constitution: written constitution, unwritten constitution. Because India is a huge country, lot of diversities are there in India, lot of people are there, and lot of complexities are there. That's why everything has been written. That's why I just said that Indian constitution is one of the biggest constitution in the world and a large constitution, voluminous constitution. And the best, it is said that the best constitution also, South African Indian constitution. Right. So in fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down any law that goes against the fundamental rights. कोई भी कानून यदि आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो रहा है तो उस कानून को खत्म किया जा सकता है. Implicity gives the Supreme Court the power of judicial review. और यही जो बात है कि कानून को दोबारा देखने की प्रतिक्रिया को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. Am I clear? Hope so. Besides, as we saw in the section on the jurisdiction of the Supreme Court, in the case of federal relations too, the Supreme Court can use the review powers if a law is inconsistent with the distribution of powers laid down by the Constitution. मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगे कि पास का ये ठीक से डिवीजन नहीं हो रहा है. तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. लेट मी टेल यू वन थिंग. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट. 4 गवर्नमेंट है ना. तो 4 जो फेडरलिज्म है हमारी गवर्नमेंट की, तो दे आर इंटरकनेक्टेड. ऐसा नहीं कोई भी एक दूसरे से जुदा है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. तो सुप्रीम कोर्ट सेज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शुड बी वेरी मच एक्यूरेट. No interpretation, no interference from one power to the another power. जहां पे ये लिखा गया है ना, ये स्टेट का मामला है, सेंटर वहां पे रिव्यू कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, बट समटाइम मुझे नहीं लगता कि उसको बने. they cannot, every time center cannot force the state. Every time center cannot force the state. Yes, center is is a top hierarchy, top पे है, वो कर सकती है लेकिन करती नहीं है. बिकॉज इट विल बी chaos. हर बार वो स्टेट के अंदर इंटरफेयर करने शुरू कर दे तो स्टेट सेंटर विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम. So it is absolutely judiciously it is divided. Which power goes to the center, which power goes to the state. Where center power can applicable, where center can interfere in the state affairs. Suppose the central government makes a law which according to the some state concerns a subject from the state list. वही मैं कह रहा था ना कि एक सेंटर ने कानून बनाया एंड स्टेट थिंक्स दैट इट्स रिलेटेड टू द स्टेट. ये कानून स्टेट का है,
Center should not interfere. It is in the state list. Then the state can go to the Supreme Court. तब स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया ये काम मेरा है, ये सेंटर क्यों इंटरफेयर कर रही है? सेंटर के अपने मामले, सेंटर को अपने में देखने दो. व्हाई इट इज इंटरफेयरिंग इन मी? इन मी मतलब स्टेट के मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? So, and if the court agrees with them, it would declare that the law is unconstitutional. Let me tell you one thing. सबसे ज्यादा जानते हो प्रेसिडेंशियल रूल कहाँ पे, कौन से स्टेट में लागू हुआ? इन विच एरा, whose era? मिसेस इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी. जब भी कांग्रेस को लगता था कि यहाँ पे कुछ और पार्टीज आ रही हैं बिहार में या यूपी में, वहां पे बिहार में ज्यादातर प्रेसिडेंशियल या गवर्नर रूल लागू हो जाता था, प्रेसिडेंशियल लागू हो जाता है. Then Supreme Court interfere, because you cannot do like this. Whenever you want, you put the center rule or presidential rule or the governor's rule over there. You cannot do it. तब जाके ये रुका. Otherwise, whenever central government want to wish is there, then it declare chief minister as invalid, this and that. President rule and regulation, central rule and regulation is applicable in that particular one or two states. So it is here. Then the state can go to the. That's why state went to the Supreme Court. Then Supreme Court says no, agrees that it would declare that the law is unconstitutional. So state के government के laws को unconstitutional करार देकर उन्हें status को दे दिया गया, तुम जहां पे हो वहीं रहो, interfere मत करो. That's why it is said that Indian Supreme Court is very powerful throughout the world. Indian Supreme Court की बातों को विदेश भी मानता है कभी कभी. हमारे सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है और उनके न्याय इतने सटीक होते हैं. द जुडिशियल रिव्यूज आर सो एक्यूरेट दैट फॉरेन कंट्री आल्सो हैव सम टाइप ऑफ रिजर्वेशन. वो इंटरफेयर नहीं करती इंडिया के मामलों में. In this sense, the review power of Supreme Court includes power to review legislations on the ground that they violate fundamental rights. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इज वेरी सेंटिमेंटल अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस. इट मींस दैट नोबडी कैन इंटरफेयर इन योर फंडामेंटल राइट्स. जो आपको दे दिए गए फंडामेंटल राइट्स को दे दिए गए, वो दे दिए गए. So the review power extends to the laws passed on the state legislatures also. Together, writ powers and the review power of the court make judiciary very powerful. Here it is written. Together, here it is written. Together, in your screen also is also there, last paragraph. Together, the writ powers and the review power of the court makes judiciary very powerful. So I told you Supreme Court is very powerful. It, in particular, the review power means that the judiciary can interpret the constitution and the laws passed by the legislature. Many people think that this feature enables to protect the constitution effectively. PIL कहा था, तो कई बार क्या होता है कि लोग PIL डाल देते हैं, स्टेट के अगेंस्ट, इवन सेंटर के अगेंस्ट, राइट? तो व्हाट हैपन? Judiciary or Supreme Court reviews the matter, right? So the constitution, and that is there that due to this power only, Supreme Court is able to protect the constitution effectively and also to protect the rights of citizens. Rights of citizen को भी protect कर सकती है. The practice of entrepreneurial PIL has further added to the power of the judiciary in protecting the rights of the citizens. So ये PIL ने क्या किया? आपके rights को और मजबूत कर दिया. So now no center, no state can declare your fundamental rights invalid. No, nobody can. And do you know this is there? Did you know this is there? Wait, give me some time. It goes down.
It's over. Just give me some time. 42, 41, 40. Here. Did you know that the practice of public interest litigation more and more acceptable in many other states also? Many other countries also. PIL state and country states means countries. They are accepting PIL is also there, right, in many other countries. In Africa also, South Africa. I told you South African country. This is very much particular about the fundamental rights of the citizens and all. Now, here we will come about the judiciary and parliament. Now, what the problem is? Judiciary says it's much powerful. Parliament says I am more powerful. मतलब दो दिग्गजों के बीच में एक लड़ाई है. Apart from taking a very active stand on the matter of the rights, the court has been active in seeking to prevent subversion of constitution through political practice. Thus, areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as powers of the president of the governor, were brought under the purview of the courts. Up to basically, pehle it was not there, but now you can say that power of the governor, he is the representative of the president, and power of the president is also written in the constitution. कि आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, आपके पार को निहित कर दिया गया. Sometime, you know what the political philosophers used to say, that Indian president is a rubber stamp. पार्लियामेंट जो भी कहती है, प्रेसिडेंट हमारा जो भी प्रेसिडेंट होता है उसको मान लेता है. Right, so that is the reason. There are many other instances in which the Supreme Court involved itself in the administration of the justice by giving direction to the executive agencies. Thus, it gave direction to the CBI, initiate investigation against politicians and bureaucrats in the Hawala case. The Supreme Court ने क्या कहा? You know, Supreme Court ने कई नेताओं को now they are behind the bar. Chief ministers of the state. I will not name up those names here, but you know the better. Many chief ministers, they are still in jail. They come out in the bail and they went again up in the jail. Many, the people who are MLAs, MPs are there. Right. So because it is said that Indian judicial system is very strong. And हवाला केस जानते हो क्या होता है? स्कैम जो करते हैं ये लोग. बहुत से चीफ मिनिस्टर्स आपके यहाँ पर भी कई चीफ मिनिस्टर्स अब they are behind the bars. Teacher scam and all. The Narasimha Rao case, illegal allotment to petrol pump case. Narasimha Rao के case था. He was a prime minister. Just imagine, prime minister of India. उसने कई लोगों को पेट्रोल पंप दे दिए थे. Maybe पैसा लेकर, whatever it is. Pump case. You may have heard about some of these cases. Many of these instances are the produce of the judicial activism. और इसको कई लोगों ने बहुत, hue cry हुआ, पेपर में publish हुआ कि हवाला केस के दौरान पैसे हैं and petrol pump was given in throwaway prices. Right. The Indian Constitution is based on delicate principle of limited separation of powers, checks and balance. These means that each organ of the government has a clear area of functioning. Check and balance का मतलब क्या होता है? Indian Constitution is very, very delicate. और ये उसने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कौन सा पावर रिलेटेड which concern, state concern, central concern, local concern, panchayati concern. You cannot interfere from one part to another part. Right. Thus, the parliament and the Indian Constitution, this means that each organ of the government has a clear area, which I told you, area of functioning. Thus, the parliament is supreme. Parliament is supreme. But sometimes, judiciary says it's supreme.
It's very powerful. Check and balances. Supreme in making laws and amending the constitution. The executive is supreme in implementing their, while the judiciary is supreme in setting disputes. I told you, judicial dispute has to be there. You know, we have got 135 crore people in India, 29 states, 7 union territories, 1,500 languages, 2,500 dialects. See how the India is huge. Differences bound to be there. और तब लोग क्या कहते हैं, state 29 state, and sometimes these states are not very much friendly with the center. They used to go to Supreme Court. ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे. I will give you some homework also. Right? Your homework is, what was the main controversy between center and the parliament? Main controversy kya hai? I told you that lot of controversies are there. In parliament also, in state also, states, many, in between two states also, in center and state also. Right? So what are these controversy? Right? Page number, we will go through the page. You have to go to the page number 141, complete thoroughly again. You will start from 140, 140, or 140, then 141. I have already completed this 141 along with you. That is conflict between parliament and judiciary. You have to go through about it very thoroughly. Then page number 142. What these 19 from between 1967 and 73, the which controversy was very serious, right? A very serious controversy arose between the state and center, whose law is who is supreme. Then your page number 140 up to 143, you will go through about it. We will discuss about up to these main points also. Tomorrow I will after this, and I will put into the conclusion also what we have done to conclude this chapter. Then tomorrow I will let you know from which chapter we are going to start. Okay, so you have got the homework. You have to read the cartoon or read the cartoons. The cartoons are very interesting. How active is judiciary in trying to curb corruption in public life? Corruption तो है ही हमारे देश में, तो judiciary कैसे active role play कर रही है corruption को खत्म करने के लिए, तो कैसे कर रही है? Right. So read these all 3 pages, and I will again revise these 3 pages along with you. Then I will conclude the chapter. Till then, take care and have a nice time. Thank you.